result in the nearest future. Like कि यार ये खत्म करके चलते हैं ना. Why do we need to be here? So I love the fact that in between, there's a big change in the way people started playing Test cricket. A lot of the wickets were very juicy wickets. So let's say, if you're playing in England, Australia, South Africa, the wickets were in favor of the bowler. In India, we used to play more on the spinning track, and that's the challenge that you have to face. And you knew that, okay, if the game goes on till 4th or the 5th day, you will get a result. Imagine telling someone who doesn't know about cricket, we play over 5 days. We start at 9:30, 4:30 is the scheduled end of day's play, but we play till 5 o'clock, and after 5 days, sometimes we don't get a result. So that can be very, for the game, it's not very nice. Yeah. So I love how there's more results in today's world. Even if you're playing only 4 days of cricket, and if one day gets washed out, more often than not, still you'll get a result. So that's the beauty of Test cricket. And I feel that's how it should stay. You want to get a result after 5 days. You shouldn't have a draw. कभी-कभी, my bhai, when you want to get a result in your favor, part of doing that is taking risks. And as captain, जब कभी आप risk लेते हो, and it doesn't pay off. Is there a guilt associated when you lose a match? Do you feel bad? Like how do you let go of a risk that you took and it didn't pay off? Do you think about it often? It's like life. There are certain types of risks that you have to take, and Duncan Fletcher used to have a very nice saying, their risk, it was actually tricky how he used to say it. So their risk you cannot afford not to take, but there are certain risks you can afford not to take. So it was very confusing for me, but basically what he meant is, in life there are certain times you have to take the risk, but certain times you can avoid that risk. सुन रहे हो traders? अच्छा, FNO वाले आए हैं यार. ये रीगी का इवेंट होता है, मार्केट की आप लगा देते हो. पिछले बार भी हुआ था ऐसे ही कुछ तो. हाँ, मैं अब अभी वेरी स्मार्ट पीपल अभी बोलेंगे बाइंग अपॉर्चुनिटी है. Buy the dip. भाई साहब पैसे डूब रहे हैं, आप बोल रहे बाइंग अपॉर्चुनिटी है. एंड द ब्यूटी इज एवरी सेकेंड डे दे गिव अ थर्ड आइडिया कि ये कैंडल बन गया है, वो कैंडल बन गया है, अब ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा. इट कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स हैपन एंड दे जस्ट स्विच ओवर. वो भूल जाते हैं कि कल मैंने क्या बोला था. दे स्टार्ट ऑन अ डिफरेंट लेवल ओनली. सो हाउ मेनी इफ यू ट्रेड, ओके, जिनकी दाढ़ी सफेद हो गई है, दे नो व्हाट दे आर डूइंग. ऑल द प्रोफेशनल ट्रेडर्स, यस, दे विल कीप ट्रेडिंग. जो यंगस्टर्स हैं, प्लीज FNO में मत घुसना, निकलना मुश्किल हो जाएगा. इफ यू रियली वांट दैट थ्रिल इन लाइफ, और जो एड्रेनलिन का रश चाहिए ना, डू सम अदर एक्टिविटी. डोंट ऑलवेज गो इन, यार मैं आज 5,000 का लगाता हूँ, देखता हूँ क्या होगा. इट्स नॉट फॉर यू. द प्रोफेशनल्स, yes, they can handle it, but other than that, have a lot of fun with stock. Keep it. It's not going anywhere. FNO is knuckleball. FNO is different level altogether. Nowadays when you log into the whatever app you are using, first thing it says 90% of FNO users lose their money. मैं बोलता हूँ ये 10% बाकी कौन है? So basically those 10% are the ones who are eating the 90% of us. They are eating our money and they are making their money. Wow. Yeah, that's why I stopped. आप चेजिंग माई बाय पे छोड़ देना. क्रिकेट से कितनी जल्दी हम शिफ्ट हो गए ना. हाँ, मैं वही देख रहा हूँ, आप क्रिकेट के बारे में इतने पैशनेट, स्टॉक के बारे में तो आपके अंदर से गुस्सा निकला. नहीं यार, FNO में लॉस होता है. स्टॉक की मैं बेस्ट बात बताता हूँ. आई लव, सो बहुत ज़्यादा मैं न्यूज़ चैनल नहीं देखता हूँ, बट स्टॉक के देखता हूँ सवेरे एक बार, क्या हो रहा है ग्लोबली, क्या हो रहा है. सो लेट्स से आई हैव अ स्टॉक विच इज़ A. तो जस्ट फॉर रेफरेंस कि मैंने 1,000 रुपये में लिया था. सो इट गोज अप, समवेयर इट हैज़ गॉन टू 1,800. So 1,800, 2,000 होता है, then it comes back to 1,800. Now the narration is, इस डिप पे ना खरीदना चाहिए. And I'm like, मेरे 1,000 के 1,800 हो गए हैं. ये डिप पे जो खरीदेगा, उसके बाद जो डिप आएगा वो कहाँ जाएगा? ये है डिप पे खरीदने वाली ये. So I always get worried, कि ऑल टाइम हाई पे जब रिकमेंडेशन आती है ना, इसका आगे बहुत ब्राइट फ्यूचर है, अभी लेने का टाइम है. मैं नहीं ले रहा भाई, ये कहीं के चांद पे भी चला जाए, मैं नहीं ले रहा.
it is out of my target system, so, but that's how it is, people want to ride it, but at least with the stock, the great thing is the stock is in your account. You may have a loss, 10, 15%, 20%, 25%, but if you have bought something that has the right fundamentals, you won't make a big loss, you will get your money. FNO में खाता नहीं लगाएंगे FNO भाई हाँ, ये बोलेंगे भी स्टॉप लॉस जरूर रखना. My bhai, did you learn what's the best money advice that someone gave you maybe early on in your career or FNO वाला? नहीं यार, I feel best advice is I don't want to go with what my parents used to say about the fixed deposit because you end up losing money, with the inflation and everything. You want your money to grow, don't look for multiplication. Wherever there's multiplication, there's risk involved. So if you're conservative, the money, you'll be good. The whole problem is when people start looking for multiplication. So everything has a pro and a con side. So whenever there's rewards are high, the risk also is high. So you need to be comfortable with it. And if you invest right, and invest is the right word. If you invest right, you always have money with you. And I feel if you're looking to grow the money, you'll be good. You'll be doing well in life. Okay. So what's the best relationship advice you've gotten? They're waiting to troll me on this Relationship question. advice. Yeah, they're waiting. They were waiting for me to ask this question. No, not at all. Best relationship advice? Best relation. I know you said ki listen to your wife, but what else? So how many of you are in a relationship? Not married, but in a relationship. Youngsters कोई हैं? So basically girlfriend को सिर्फ हाँ ही बोलना है. ये उधर से start होता है because it's like early studies. तो वहाँ से जब आप फाइनली मैरिड हो चुके ना, आपको हाँ हर चीज़ में बोलना पड़ता है. तो पहले से आदत डाल दोगे तो बाद में मुश्किलें नहीं आएंगी लाइफ में. सो इफ यू थिंक, मेरा एक और फेवरेट लाइन है, मेरी वाली अलग है. इस बात पे सारे हंसते हैं, बट आई थिंक द ब्यूटी इज once you get married or if you're in a relationship for a long time, you start understanding each other. A lot of times you know what's going to happen. So in my case, in my house, I know when something is going to fall because Sakshi is moving around which table. And it happens. And that's where the relationship goes, So we have been married for now 14 years, 2.5 years of dating. And the ins and outs. The wife will know how to irritate the husband. The husband will know what question is coming. Another one of the good advice is somebody asked me, okay, in a relationship, when the lady asks a question, what should you reply? So it starts with you have to be honest, you have to say the truth and everything. Once you get married and after 5, 10, 15 years, you answer so that the next question doesn't come. Right and wrong is not important. Next question shouldn't come. Otherwise it keeps on coming. And another thing is when you ask one of your friend, they'll be like, my wife also asks the same question. So basically the faces are different, the questions are the same. And whatever I have said, it is actually 100% applicable on the man also. We also commit the same mistakes. We are also irritating. We love to pull the leg, but at the same time we are not very good when it comes to, accepting the jokes on us. So I think that's why, it's a perfect combination. And the essence of marriage is after 50, 55, you have kids, the kids go to maybe a college or a hostel. And that's the time you are just with, with your wife and you're having whatever that companionship and, you talk about the times that have gone by. So the essence will come later, but you have to survive the marriage till then, to enjoy marriage. आपने कहा कि the men also commit mistakes and they are irritating. तो आप में कौन सी qualities आपको लगता है कि your wife finds irritating about you? Well, I think, most of the things that I do irritates her. That's what relationships are for, So a lot of things happen. I don't know what. So
generally we don't like to get into confrontation. You know, if the questions are tough, harsh, you know, we get up, we go somewhere, we find a place. Usually men, they'll find a corner and they'll be happy. In my case, I cannot find a corner, so I have to get into the garage. अरे मुझे वो बाइक बनानी है यार, you know, I'll forget otherwise. वहाँ जाके कैंडी क्रश. नहीं कैंडी क्रश नहीं, फिर वो बाइक पे लग जाते हैं, because the bike never complains. You know, even if you do it wrong, you know. I don't know why you're laughing. I'm serious. Has your bike ever complained? ये कोड बनेगा आपके नाम से. No, but that's how it is, you know. And my wife now, even if I tell her, you know, like, okay, let's go for a ride. She's like, no. गाड़ी में जाना है तो बात करो, बाइक में नहीं जाने वाला. Like, happy, okay, I'll go for a ride and I'll come back. Nice. So if not confrontation, how does the ice break? Sorry? How does the ice break between two of you? कि लड़ाई हो गई है तो अभी Now we're in- लड़ाई एंड कैसे करते हो आप? So initially, this I'm talking about 2010-11. So initial that breaking in period. So at times she would get angry with me and she won't talk to me. She won't talk to me for 3-4 days, 5 days. I was like, okay with it. Then she realized, if I fight, if I'm quiet, he's happier. The game plan changed. So now she कैप्टन fights. कूल बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है? Yeah, she fights or we fight. That's better way to put it. So whenever we fight, she goes outside, she comes back, and as if she never fought with me. I still have it, like, you know, we had a fight. She's like, hardly matters. She's moving on in life. You know. आपको लगता है सिर्फ आप ही कूल हो क्या? आई एम ऑल्सो कूल एज क्यूकम्बर. नहीं लेकिन सर वापस कमिंग टू कि अब तो कॉपीराइट वगैरह आ गया है, आपकी फोटो वगैरह कहीं यूज होती है, लेकिन मेरे को याद है कि मैं भोपाल में रहता था और आपका वो श्रीलंका वाली इनिंग थी, उसकी आपकी एक फोटो है दोनों हाथ उठाते हुए 183 जाते हैं. वो फोटो कहाँ पे छपी हुई है? वो एक बेर के पाउडर का पैकेट आता था, उसमें भी छपी हुई, 1 रुपए के 4 पैकेट आते थे, उसमें भी आपकी फोटो छपी हुई थी, आपके नाम से भेजे थे. कभी कभार ऐसा हुआ कि आप देखिए खुद ही चौंक गए कि मेरी फोटो कहाँ लगा दी पड़ी. 2009-2010 में आप किसी भी नाई के पास जाओ, हाँ, बार फोटो तो रहती थी वहाँ पे. फोटो वो लंबे बाल. I'm happy. God has been kind. I've got a lot of love and affection throughout wherever I've been, and I don't see any harm in that. You know, so it's not like a big MNC is doing something wrong or Yeah. using my image to make a lot of money. So it's more from a fan's perspective. I can still understand. You know, people may say, okay, they shouldn't use the picture in this, that, and all of that. But you know, at the end of the day, how many can you stop? पर आप शौक हुए कभी कहीं ऐसा अपनी फोटो देख के कि ये कहाँ लगा दी? नहीं ऐसा शॉक तो नहीं हुआ है. It takes a lot, you know, for me to get shocked, you know. So no, I've never really got shocked. You know, like अगर ये क्या है यार. भाई ये एक पर्सनल सवाल था कि ये गोल्फ का सीन क्या है? ये सारे स्पोर्ट्समैन रिटायर होने के बाद गोल्फ क्यों खेलने लगते हैं? और आपने ट्रम्प जी को आपने जीतने दिया कि आपने वहां पर भी? I'm quite intelligent, you know. I've handled the team for very long. I became his partner. So. अच्छा. So we were partners. So there was no way in the world, you know, the opposition was winning. So he won quite easily. अच्छा. And I don't think the other team had an option. So, but golf, I feel cricketers. I think golf is very different, you know, because I also play golf and I've realized मेरा जो क्रिकेट का गेम है ना, it's very different. So for me, I have to hit the ball hard. Golf में you're not supposed to hit the ball hard. You use the club, and if you want to hit longer, you use a different club. You know, so you basically have a nice swing. The club does the trick for you. मेरा वैसा नहीं, मैंने जोर से मारना. So even if I tell myself, you know, कि नहीं बॉल रखा है, just swing, have a normal swing and hit the ball, it will go. बट उसमें मजा आता है सर, जेन्युइनली मजा आता है, ईमानदारी. नहीं मजा आता है. First initially I thought it's a very boring sport. Yeah. Then I played. So basically you are fighting against yourself. You know, whatever, let's say, you know, you finish the game in 98 strokes. So next time when you go, you want to do a 96, 95. So you're not competing against the opposition because your handicap is set. So basically what you are doing is you're competing against yourself. So I don't know about any other sport, or there may be not many sport where you can compete against anyone. So even against the top golfer in the world, you know, you can play and compete because you get strokes according to your game. So he'll be giving you strokes. So let's say if he finishes in 72 strokes and you finish in 95 and your handicap is more or less, then you can still win. So the pressure is always balanced, but you have to be consistent with your game. Nice.
Tala for a reason. I love playing golf with Tala. मैं भाई एक स्टोरी मैंने और कुल्लू ने सुनी थी about how in Dada's last test match you allowed him to last session में आपने उनको कैप्टनसी करने दी थी. उन्होंने तो एक पॉडकास्ट में मेंशन किया था, आपके एंड से हमने स्टोरी सुनी है, which is what a nice gesture. How do you think of it? And फिर आपने apparently एक बार पूछा, उन्होंने resist किया, फिर आपने दोबारा पूछा. Where did that thought come from? Well, it's very simple, you know. He has been one of the greatest captains that India has ever produced. So, what's a better farewell you can give from your side? You know, that's the last day he's standing on a test match field, you know, playing the game, and you know, if he can say goodbye, leading for a while, you know, then why not? You know, it doesn't really change the result of the game. So, you know, that was the reason behind it, and I don't know whether he enjoyed it or not, because it came all of a sudden. It wasn't planned that, you know, this is what you should do. But I thought, you know, that the best way of him, you know, giving a farewell, leading on the field, you know, even if it's for 15-20 minutes, then why not? Would you like the favor returned to you? Like, is that something that you would like? एक तो ये handover कैसे होता है? ऋतुराज भाई देख रहे हो कि नहीं? But being a wicket keeper, you're always the vice captain of the team, in the sense your hands will always move. You may not do the bowling changes, but what you're still doing is setting the field, taking the DRS call, you know, whether it should be taken, not taken. So you're always the vice captain. So I always felt the wicket keeper is always the vice captain of the team. So you're still doing what a captain does, you know, almost, apart from taking those crucial decisions. And you're not owing up to the responsibility, you know, the captain का tension है. I was trying to help the captain. ऋतु तू देख ले अभी. मेरे तरफ से हो गया, बाकी तुम्हारा headache. Was April 2nd, 2011 the happiest day of your life? You know, it's very difficult to say whether it was that particular day or not, but it was a very memorable day, you know, because it's very difficult to differentiate. We have had some very good cricketing moments, you know, throughout the career as a team, as an individual player. So I would say that it was one amongst the best moments that I had. And you know, the more we are able to recreate that moment, and I'm not saying me as an individual, but you know, the Indian cricket team as a team, you know, for the nation, that will be the best, because that's what cricketers want to do. We want to contribute so that the country is able to win the big tournaments, you know, the World Cups, you know, the champion trophies and all the big tournaments. So it gives a sense of satisfaction, and especially if it's happening in India, 40-50,000 people on the field, you know, singing the song, you know, being with you throughout, that makes it even more special. What other day comes close? Well, the 2007 when we won the T20 World Cup, you know, because we had a very tough time in the 50-over World Cup the same year, you know, in West Indies. So we were coming out of it. So the tournament was in South Africa. Once we came back, landed in Mumbai, it was cloudy, it was raining. So you're like, okay, fair enough, catch your flight and go back home. But you know, the reception was amazing, you know, right from the aeroplane, you know, lots of people. We don't know how the immigration happened. Then we got into the double-decker bus. It was raining, but there were people on both sides of the road. So you know, that was very memorable. Again, it was quite similar to the kind of reception the Indian team got now once they won the World Cup. So I feel you know, moments like these are very special, and you always cherish them, you know, throughout your life. Before we head into the audience, कुल्लू एक last क्वेश्चन, उसके बाद ऑडियंस से बात करेंगे. सर, हमने एक वीडियो देखा जिसमें आप पार्टी में गाना गा रहे हो. अगेन आपके बहुत खास फ्रेंड दीपक चहर ने डाला है वो वीडियो. तो आप जनरली पार्टीज में डू यू सिंग, एंड व्हाट आर योर 3 फेवरेट सॉन्ग्स यू सिंग इन द पार्टीज? नहीं, मैं ऐसे पार्टीज में बहुत गाता नहीं हूँ. हाँ, जैसे टीम एनवायरनमेंट अगर है तो आई डोंट माइंड, बिकॉज व्हेन यू आर द कैप्टन नोबडी सेज यू सिंग गुड और बैड. यू जस्ट क्वाइट, यू नो, एंड they are always under that pressure. अच्छा, मैं खराब कर रहा हूँ, तू गा, चल खड़ा हो जा. I love Kishore Kumar songs, you know, so any one of Kishore Kumar song I would love to sing at the right time. Don't say now. नहीं अभी नहीं बोला, सिर्फ गाने जान रहे थे. ऐसा कुछ नहीं बोले. But yeah, I'm a big Kishore fan, so आज दीपक चहर को फोन जाने वाली है कि तूने क्या-क्या बता दिया. हमें पूछना है कि और क्या-क्या बोल के आया भाई. All right, guys, should we open it up to the audience? Yes. Yes. Okay. Hello. All right. We'll start from here.
This side, yes sir. मैं FNO रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ. I'm just saying. सर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ. भाई मेरा एक क्वेश्चन था आपसे. when you were retiring yourself, right? जब आप रिटायर हो रहे थे, उस टाइम पे यू मस्ट हैव गॉट मिक्स फीलिंग्स एज पर माय आइडिया कि यार एक है कि हम इस गेम के किंग हैं, अभी और खेलना है, अभी थोड़ी ये फीलिंग है. एक साइड होगा यार आई वुड मिस दिस गेम मच, एक साइड होगा नहीं अभी मुझे नहीं खेलना है, वुड बी डन. हाउ वुड यू कम आउट ऑफ दोज मिक्स फीलिंग्स एंड अभी इतने टाइम बाद लाइक हाउ डू यू फील आफ्टर दैट? Well, you know, it is always very difficult to take a decision like that because whatever I have got or cricketers we get in our life, it is predominantly because of cricket. That's amongst the only things, you know, that we know how it needs to be done or what needs to be done. So it's always difficult, but if you pick the right reasons why you need to do it, in the sense why you need to leave it, it becomes quite easy to take a big decision like that. So it wasn't very difficult for me. So in my mind, I'd actually retired after the 2019 World Cup, you know, because after that the next World Cup was too far away. If I'm not wrong, they just delayed the T20 World Cup by a year. So next year was the T20 World Cup. So I was like, you know, there's no rush of announcing a retirement, but in my mind and in my actions, I was done. So effectively, if you ask me when did I retire, I retired in the 2019, you know, World Cup semi-finals. You know, for me that was the end. And then later was a decision that you finally took. वो तो announcement हुआ ना, decision तो पहले हो गया था. It was more an announcement for everyone, you know, that finally the closure has happened, you know. वो वीडियो एडिट होने में भी टाइम लग गया था. रेंडर हो रहा था. लंबा वीडियो था वो. हाँ, थोड़ा इंटरनेट स्लो था. थैंक यू सो मच. थैंक यू. That was also Kishore Kumar's song. मैं पल दो पल का शायद. मुकेश. Such a heartbreak it was. Okay. धोनी भाई यहाँ पे सर, यहाँ पे सर, धोनी भाई यहाँ पे है सर, लास्ट यहाँ पे सर. यस राइट. अगली बार ऐसे करना क्योंकि हाथ ठीक है सर. भाई अभी तो सबने बोल दिया है कि आपको कैप्टन कूल या दुनिया भर के लोग बोलते ही रहते, लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या मैच में जीतने के लिए स्लेजिंग जरूरी है? नहीं, मैच जीतने के लिए स्लेजिंग जरूरी नहीं है. स्किल सेट होना जरूरी है. जो आपने प्लान किया है उसको एग्जीक्यूट करना जरूरी है. आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ स्लेजिंग, बट येस, फ्रेंडली बैंटर, थोड़ा पैर खींचना, थोड़ा कुछ बोलना, आई एम फाइन विद इट बिकॉज इट जस्ट एड्स अ बिट ऑफ स्पाइस, you know, in the cricket that is happening. But sledging is not the most important thing. Skill set होना जरूरी है because also we are thick skinned in the sense, मोटी चमड़ी के होते हैं. ऐसा नहीं कि कोई कुछ आके बोल देगा तो you know we'll change our plans, and almost 90-95% of the cricketers are like that. But still, अगर आप sledging करके if you are able to you know get hold of somebody's nerves, they may do something silly, but more often than not, you know, you won't. But there are certain cricketers जो कि गुस्सा हो जाते थे तो they were the targets. More often than not, they will be the people who will be targeted. You know, थोड़ा कमेंट करके लोग जाते रहेंगे. लेकिन दिनेश कनेरिया को सर आपने कंटिन्यू 2 छक्के तो लगाए थे. स्लेजिंग का पार्ट नहीं है वो, क्रिकेट था. छक्के मारना स्लेजिंग में नहीं आता है. थैंक यू सर. लव यू. Hi Dhoni, this is Alicia Fernandez from Prime TV, and I would like to first of all inform you that we have waited last time to see you play in Goa, but due to some reasons previously Goa match got cancelled of yours. So how is it being here in Goa, and tell us about your relationship with Goa? मुझे तो लगा रिफंड मांगने वाली है मैम कि वो कैंसिल कर दिया सर आज. एक ओवर यही खेल के दिखाओ. बट गोवा में इंटरेस्टिंगली काफी बार हमारे मैचेस वॉश आउट हुए हैं. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट टाइम भी हम लोग आए थे कुछ समय पहले. इट वाज अ कंप्लीट वॉश आउट इन द सेंस कुछ हुआ ही नहीं. यू नो, आई डोंट इवन रिमेम्बर विच साइड वी वर स्टेइंग. तो हमने ना वो एक जिप्सी हायर करके, माई वाइफ वॉज ऑल्सो हियर, शिट कि हम लोग दूसरी तरफ जाएंगे. सो वी वेंट टू जस्ट गो अबाउट. उस जिप्सी में ना हॉर्न नहीं बजता था और ब्रेक नहीं लगता था. इन द सेंस हॉर्न काम नहीं कर रहा था, ब्रेक बहुत कम था. एंड माई वाइफ इज लाइक तेज चलाओ. मैं किधर तेज चलाऊं? एंड द बेस्ट इज वी वेंट ऑन द अदर साइड एंड शाम को ना इट स्टार्टेड रेनिंग एंड इट्स एन ओपन जिप्सी. सो देन समहाउ वी गॉट वन ऑफ आवर फ्रेंड्स, यू नो, जिससे दोस्ती हुई, भाई ये जिप्सी तू पकड़, तेरा गाड़ी हमें वापस जाना.
But yeah, you know, Goa is it's different. So my wife is a big fan of, you know, beach. She loves beach, water. She loves Goa. She's like a brand ambassador for Goa. वो कहीं भी अगर गोवा का टॉपिक आ जाए, she can speak for half an hour. So Goa is one thing. Second is hostels. Anybody who has been in a boarding school, college, anywhere, she thinks that they are batchmates. So she loves Goa. I get that Goan attitude when I am here, very laid back. So I came here 3 days back. पहले 2 दिन ना मैं रूम से भी बाहर नहीं निकला था. So imagine I'm right next to the pool. The beach is like 50-60 yards, and I was in my room. I didn't even get out of the room. So that's me. I कौन सा hardly रूम get नंबर है out. सर? रूम नंबर कौन सा है? I just forgot, you know, because they take me from a buggy. So अच्छा, रूम ठीक। नंबर याद रखने की जरूरत नहीं. ये हमारे जैसे लोगों को याद रखना पड़ता है. All right. Next question. This side. Yes. Good evening, sir. Hello. So, back in the year 2009-10, आप एक बार, I am from वाराणसी, आप एक बार वाराणसी आए थे with आरपी सिंह, एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी किसी से, तो आप एक बार वाराणसी कनेक्शन के बारे में आप बताएंगे सर? सर ऐसी कोई सीक्रेट मीटिंग नहीं हुई थी. वो न्यूज में हेडलाइन थी, धोनी आए और चले भी गए, पता और वो नहीं चला। सीक्रेट थी तो आप नहीं रही अब सीक्रेट. बताते हैं आपको सीक्रेट क्या था. न्यूज हेडलाइन आई थी, धोनी आए और चले गए, तो और क्या करना था? धोनी के आए और चले गए और पता भी नहीं चला. इट वॉज मोर ऑफ अ रोड ट्रिप. हम लोग दिल्ली से रांची आ रहे थे. सो वो बड़ी मैंने एक हमर ली थी, यू नो, H2. सो वी वर ड्राइविंग इट. सो बनारस हम घुसे थे नाश्ता करने के लिए. सो वी वर गोइंग नॉन स्टॉप. सो वी जस्ट स्टॉप देयर फॉर हाफ एन आवर 45 मिनट्स. नाश्ता करके देन वी वेंट अहेड. सो दैट वाज द होल थिंग. एंड आई वाज सो स्केयर्ड, क्योंकि एक तो ये गाड़ी बहुत चौड़ी है. मैंने अपने फ्रेंड को दे दी, बोला मेरे से नहीं चलेगी भाई. सो व्हेन यू आर सिटिंग, ऐसा लगता है ना रिक्शा तो मेरे नीचे आने वाली. आई एम टेलिंग यू, आई वाज सो स्केयर्ड. आई वाज लाइक आई कैन नॉट ड्राइव ओवर, या मैं किसी ना किसी को धक्का मार ही दूंगा. सो माय फ्रेंड एक्चुअली ड्रोव. So he took it inside. We had our food and everything. It's coming back. The moment we hit the highway, I was like, I'm comfortable driving now. तो यही थी सीक्रेट मीटिंग, नाश्ता. अभी तो शायद ट्रैफिक कम हो गया ना. ये हाँ है ना. मलइयो थी सीक्रेट मीटिंग उनकी वहाँ. Lots of Varanasi also has a lot of hostels. अच्छा हॉस्टल किस टाइप के हॉस्टल की बात कर रहे हो? वो अलग hostels बता रहे नहीं, हैं. एक वो ओल्ड एज वाला हॉस्टल भी है. नहीं वो तो ठीक है, but a lot of new hostels are there. जैसे since your wife is a fond of that, so maybe you can try visiting again. डेफिनेटली आई वुड लव टू गो. यार मैं गया नहीं हूँ पिछले, आई डोंट थिंक लास्ट 10 साल में मैं गया हूँ. यू नो नाउ सो ब्यूटिफिकेशन वगैरह हो गया है. यू नो एवरीथिंग इज मैसिव ओवर देयर. क्रिकेट स्टेडियम भी बनने वाला है, रोड्स चौड़े हो गए हैं. सो देयर इज रीजन फॉर मी टू गो ओवर देयर, बट लेट्स सी, जब बुलावा आएगा जाएंगे. बहुत जल्द आएगा. थैंक यू सर. वो एक्सपेक्ट कर रहा था कोई जूसी स्टोरी. उसे मिला पोहा. पूरी सब्जी खा के निकल गए. हेलो भाई गुड इवनिंग. भाई आज आप देखिए, आज की डेट भी 2+5 7 है, थला फॉर अ रीजन. और सर आपका डेट ऑफ बर्थ भी देखिए जुलाई 7. आप जब पैदा हुए 7. आपको कैसे पता मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है असली है? सर वो गूगल पे तो यही दिख रहा है. इवन आप देखिए ईयर भी 81 है. 8 - 1 7. तो सर 7 से आपका गहरा नाता, और हम लोग बहुत इमोशनल है आपका जर्सी नंबर 7 को लेकर. तो सर मुझे एक क्वेश्चन आपसे ये पूछना था कि डू यू बिलीव इन न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी? नहीं सर, मैं आई वुड से आई डोंट बिलीव, बट आई डोंट गेट इनटू इट. तो बीच में से ही फ्लाइट में काफी टाइम पहले एक सज्जन मिले थे. उन्होंने बोला अगर आप अपना जर्सी नंबर 7 से बदल के ये कर लोगे ना, आप और ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा. बोला सर ये बताओ, आज 7 से मैं जो मिनट से 7 से मैं 11 करता हूँ. हु इज स्टॉपिंग मी नाउ फ्रॉम 11 to 13, 13 to 20, 20 to 25? आप हर चीज लक के ऊपर नहीं छोड़ सकते. यू हैव टू बिलीव इन हार्ड वर्क, यू हैव टू बिलीव इन डेस्टिनी. सो आई वाज लाइक, मैं बिलीव करता हूँ, बट आई एम वेरी हैप्पी विथ नंबर 7. नो, सो आई विल स्टिक टू नंबर 7. मैं इस भंवर में नहीं घुसना चाहता हूँ जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाए. एज यू सी, क्रिकेट इज अ वेरी सुपरस्टिशियस गेम. You know, so most of the cricketers, they have superstition. मेरे से मत पूछना, मेरा क्रिकेट खत्म हो गया है, so I'm not telling you my superstitions, but that's how it is. So I never got into it for a simple reason कि I would rather think about what is wrong in my technique,
where I need to put in the hard work rather than सोने से पहले ना यार 7 की जगह ना 21 कर लेता हूँ, तो कुछ तो फायदा होगा उससे। मैं तो ये सोच रहा हूँ वो कौन आदमी जो आपको कह रहा है कि ये कर लो और सक्सेसफुल हो जाओगे। आपको कहता था इधर देख 5 IPL ट्रॉफी वहां है, ICC वहां है, और क्या चाहता है तुम मुझसे। थैंक यू सर, थैंक यू। Alright, I think that's it in the Q&A session. Guys, had a good time? If yes, then please put your hands together. Make some noise, guys. Come on! For Wahi Bhai, for Tanmay Bhatt, for Aditya Kulshrestha and Karishma Mehta, guys. But you know, at the end of the day, he understood what is important is हम सब गलती करते हैं, but हम उस गलती से क्या सीखते हैं, that is the most important thing. और दो गलतियां जो सेम होती हैं उसके बीच का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा आप क्रिकेटर हो, चाहे आप बॉलर हो, चाहे आप बैट्समैन हो। एंड हाउ यू सेड ना, हाउ टू criticize people, how to tell them that what they have done is wrong. I always felt that it shouldn't be demeaning. A lot depends on the kind of relationship you have with the individual, and you know, you want to say stuff that helps the individual become better. You know what I've realized with the cricket team or us, you know, हम as Hindustani, अगर आप बोर्ड रूम में किसी को कुछ बोल दो ना, उनको बहुत खराब लग जाता है। बट इमेजिन यू एंड हिम इन अ टॉयलेट, आप 2-4 ग्रामर के साथ भी कुछ बोल दो ना, इट डजंट फील बैड। सो फ्रॉम द एसेंस ऑफ व्हाट यू हैव टोल्ड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, इट गोज, अच्छा मुझे ऐसा बोल दिया, अरे क्या बोला, सो ही हजंट लिसन टू व्हाट यू हैव सेड, इट्स जस्ट दैट यू नो मुझे खराब लग गया, सबके सामने बोल दिया। सो इफ यू नो द इंडिविजुअल, यू नो व्हाट इज द बेस्ट वे टू वर्क विथ हिम और हर एंड गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। एट द एंड ऑफ द डे, if you're leading people, you know, you want to get the best out of them. Whatever their level may be, you want them to improve, but at the same time get the best out of them. यहाँ पे ऑडियंस में जो बॉस है, यस, अगले दिन लोगों को डांट रहे हैं बाथरूम लेके जाके। फिर माई भाई ने कहा था कि लैट्रिन के सामने डांटना, और वो सिर्फ ग्रामर ही ग्रामर बोल रहे हैं। बाकी बाथरूम में एक चीज ध्यान रखना, किसने किसको झापड़ मारा पता नहीं चलेगा, there's no evidence. Okay, you want to go? So, your stunt mic conversations are hilarious. जो ऋषभ पंत के साथ हुआ था was very very funny. तो किसके साथ सबसे ज़्यादा banter है टीम में? It's not targeted banter. You know, जो भी उस समय जो कुछ कर रहा होता है, depending on that, you know, you try to say whatever. It turns out to be funny. ऐसे डालना है तो रख ले। so stuff like that, you know. इसे गर्लफ्रेंड नहीं है वहाँ। एक छक्का खा के दिखा। That is generally for people. जैसे क्रिकेट में क्या होता है ना, हमारा almost 80% of cricket happens right in the middle. तो स्पेशली जो फील्डर्स बाउंड्री पे होते हैं या 30 यार्ड पे होते हैं ना, आई हैव नेवर अंडरस्टूड व्हाट दे लुक बिहाइंड इन द क्राउड। तो पहले तो 30,000 40,000 लोग हैं, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई एनीवन फ्रॉम दैट डिस्टेंस। आपका एक कैप्टन होता है, एक बॉलर होता है। सो जनरली ऑन द फील्ड दीज आर द 2 people who are in charge. अगर कैप्टन विकेट कीपर है तो आसान है, नहीं तो 3 इंचार्ज हो जाते हैं। अगर एक कैप्टन हुआ, एक विकेट कीपर होगा, एक बॉलर। इन द सेंस हो सकता है बॉलर को कहीं पे कुछ स्पेसिफिक चेंजेस चाहिए फील्ड में, तो वो आपको try to take your attention. But अगर कीपर और बॉलर है तो और आसान है। But I never understood, they always look the other way. So that's the time when you say कि उधर कौन है भाई, हमें भी बता दो। You know, I'm not able to see who's there. कुल्लू की एक बहुत बढ़िया स्टोरी थी, मिसबाह उल हक ने जो स्टोरी बताई थी। हाँ। प्लीज आप ऑडियंस को बताना और भाई भाई को सवाल पूछ लेना। तो मिसबाह उल हक ने स्टोरी सुनाई थी कि आप शायद इंडिया ए या अंडर 19 में पाकिस्तान गए थे और आपने उनको बहुत रन मारे थे, बहुत ज्यादा रन मारे थे, और उन्होंने अपनी टीम को जो है बताया होता कि ये प्लेयर आ रहा है, इसको जरा ध्यान से खेलना। फिर आप जब नेशनल साइड में आए तो पहले मैच में जब आप कम रन पे आउट हुए तो वो जिन लोगों ने आपके बारे में खौफ फैलाया था उनको बहुत ट्रोल करते थे वो लोग कि ये तुम किसके बारे में बोल रहे थे। फिर आपने तीसरे मैच में जब 150 बनाया तो फिर वो लोग वापस ट्रोल करने लगे थे। तो आपको कुछ स्टोरी याद है उसकी, जब आप फर्स्ट टाइम? स्टोरी नहीं, मैंने इंस्टा पे देखा था वो। सो दे सेड कि ये मारता है, ऐसा करता है, वैसा करता है। तो मैं बांग्लादेश सीरीज में आई हैडंट स्कोर, तो उसके बाद वापस जब वो बैठे थे पाकिस्तान के अगेंस्ट, आई गॉट माई फर्स्ट सेंचुरी। सो दे सेड कि ऐसा मारता है। नहीं, तो आप जब अगली साइड में गए थे, अंडर 19 इंडिया ए में गए थे, तब का कुछ आपको याद है कि आपने जो इतना खौफ कैसे बना लिया? सो हम लोग कीनिया गए हुए थे। सो इट वाज अ ट्विन टूर, जिम्बाब्वे और कीनिया का टूर था। तो कीनिया में इंडिया ए थी, पाकिस्तान ए एंड कीनिया की टीम थी। सो दैट वाज द टूर एंड आई गॉट अ चांस टू ओपन।
Dinesh was also part of the team. Dinesh Karthik, he got selected for the Indian cricket team. So वो चला गया, and then I got an opportunity to play for India A, and I was batting top of the order. Open में कर रहा था, one down खेल रहा था. So I got an opportunity, and it was a lot of fun. The condition was slightly challenging, but also when you get a chance like that, you want to make the most of it. And Pakistan was a good side. Kenya की उनकी जो top international side थी, that was playing, but Pakistan की A team थी, so a lot of cricketers who played with me later on, they were also part of the squad. So it was fun, as I would say, but at the same time, after that tournament, I was sure that I'll get a chance to play for India. अब 3 महीने के बाद chance मिले, 10 महीने के बाद chance मिले, but I knew that I'll get a chance to play for India. So that was a breakthrough tour for me. अब वो बोल रहे थे गेंद वापस ही नहीं आती जब आप इसमें से ग्राउंड बहुत बड़ा था यार वहाँ. इसमें से मैंने ये पिकअप किया कि माही भाई रील्स देखते हैं. माही भाई आप कभी कभी मीम आता है आपके बारे में, तो आप क्या करते हो? आप उसे आप नॉट इंटरेस्टेड कर देते हो, क्या करते हो? स्किप करके मैं दूसरे की मीम्स में चले जाता हूँ. अपने बारे में क्यों देखना यार, जब पता है कि कुछ आने वाला है. Why do you want to see it? And I'm not somebody who gets into the comment section and read comments and all. So अगर आपको कुछ पोस्ट करना है, आपने पोस्ट किया, बस that's it. Don't start getting into the comment section and all of that, because the people sitting to have fun, at whose expense, they don't really care. So they may say something that is not so nice about you. So the best thing to do is use it for what it is, and I feel that's what I do. So what do you use it for? So mostly, I'll complain about also one thing. So I'm a motorhead, so I love cars and motorcycles more than cars. So you get a glimpse into everybody's life. So whoever has a motorcycle, they love to clean it up and they'll put a video. The only thing I never understood is when you put a video of your motorcycle, why do you put a background music? I would want to hear the exhaust of a motorcycle, the revving of a motorcycle. Imagine there's an old Kishore Kumar happening and it's a motorcycle, and I am like, okay, I want to see this. You switch the volume on and then you realize, there's no exhaust note here, it's something else. But yeah, to keep a track of the Instagram, thoda news channel की तरह भी हो गया, but you cannot trust everything. They'll put a picture and they'll write something, and अच्छा ऐसा भी होता है, but you have to go back and check with the news channel as to what really is happening. अभी तो ऑक्शंस के टाइम पता नहीं कौन कहाँ जा रहा है इंस्टाग्राम के हिसाब से. नहीं, अच्छा वो तो यार अभी हर कोई मालिक बन के बैठा हुआ है, जिसको जो प्लेयर चाहिए, he is coming into auction, we will buy him, we should do this. Auction is like that. Nobody knows. Like once people come into the auction, you don't know where you're going, and the best part is the fans. They are always like, ये auction में आ रहा है, अब ये इस टीम पे जाएगा. You are into the market. Whoever has the money to buy you, they'll get you and you'll have to play for them. So that's the beauty of auction. It's not a trade that कि A player is getting traded to B franchise. You can go anywhere. Auction is 7 letters. थाला for a reason. आपको भाई ये थाला for a reason मीम आपको पता है क्या है और ये क्यों है? और मुझे पता है, but I don't know the reason behind it. I don't know if it's funny or it is supposed to pull my leg or it's a banter, it's a meme, whatever it is. But I think my fans have turned it into something that's in my favor. That's what I feel. Correct. And I've got brilliant fans. That's what I would say. I don't need to open my mouth or say anything. They are the ones. If they feel somebody has been nasty to me, they take care of it. So I'm just keeping quiet. I enjoy my life. I try to play good cricket, and that's what it is for me. No, it's not trolling. I think thala for a reason is Thala for a reason is for respect. वैसा है. बट बाइक्स की बात हुई थी, एक मिनट बाइक की बात हुई थी, तो आप अगर आप अपनी एक बाइक निकालो तो कितने महीने बाद आपको रिपीट करनी पड़ेगी? ये बाइक्स बहुत है, बट सब चलने की स्थिति में नहीं है. सिर्फ बॉडी बहुत है. Like I have over 100 bikes, but not all of them are in running condition. So जब कोविड हुआ था तो I got a chance to spend a lot of time with the bikes. So जो मुझे पसंद है, जिसके बारे में मुझे knowledge था, so they're like 25-30 of them, I got them back into running condition. And then उस समय deliveries वगैरह नहीं हो रही थी, but later on when the deliveries started, I said ठीक है यार, इंजन तो अब काम कर रहा है, now make the cosmetic changes. So I did a lot of them. So if I'm right now, I'll be riding maybe 35 bikes. I can easily do that. Then there are a few vintage ones where the brake is on the other side, or vintage
थोड़ा एक्सपीरियंस खराब रहा है, काफ़ी बार धक्के देने पड़े हैं, सो थोड़ा डर लगता है कि रोड में कहीं अगर खराब हो गई ना तो व्हाट टू डू. सो the bikes that I trust, I know that they won't left me stranded, otherwise I take it for a ride. Vintage is also 7 letters, just say Thala for a reason. सर बाइक हो या प्लेयर, आप काम निकलवा ही लेते हो कुछ ना कुछ करके. भाई ये बेसबॉल का क्या ख्याल है? चल रहा है अभी, हाँ. तो आप पहले करते थे, अब ये लोग करने लगे. Yeah, you can give cricket any term that you want to. What we have seen is cricket has evolved. The way people are playing cricket is very different. जब बहुत पहले जब वनडे आया था तो समथिंग वाज कंसिडर्ड अ सेफ स्कोर. अब वो बोलते हैं यार ये तो 20 ओवर में भी सेफ नहीं है. सो when you give something a term, it becomes much more interesting because you start talking about it, you start relating to it. But at the end of the day, what is it? It's a way to play cricket. Some people want to play aggressive cricket. Some people want to play authentic cricket. A lot of that depends on the kind of team you have got. Whether they can change the way they play that cricket, is something that is very important. Not if there's something that can be done, not everyone can do it. Like let's say somebody like a Bumrah, he can bowl 6 Yorkers. Imagine somebody who's not able to do that. If you still ask him, he may improve over a period of time, but he may end up giving a lot of runs till that point. So what is important is to realize the strength of your team, and according to the strength of the team you decide which is the way you want to play cricket. Maybe you want to change the way you play cricket, but it takes time. It doesn't happen that overnight you decide अच्छा कल से हम ऐसा करेंगे. It doesn't happen. So you need to give time to individuals because they have played maybe 10, 12, 15 years of cricket since they started, and they have a certain way of playing cricket. So you need to give them that time to change the way they play their cricket. You got something? आजकल हम देख रहे थे अभी बांग्लादेश के खिलाफ एक टेस्ट मैच था जहाँ पे वी प्लेड आवर वर्जन ऑफ व्हाटएवर वी कॉल बेसबॉल. पर भाई ऐसा भी एक जमाना होगा जहाँ पे पुराने जमाने में जब टेस्ट मैच जब चलता था 4 दिन बैटिंग, 4 दिन एक टीम बैटिंग करी है. डू यू रिमेंबर एनी टेस्ट मैच वेयर यू फेल्ट लाइक कि भाई डिक्लेयर करते ये हो क्या रहा है कि आप बॉलिंग सबसे और फिजिकली चैलेंजिंग आपको काम करना पड़ता था आपको? So for me, the most difficult time during a test match was the 5th day of the test match, which is the last day. And जब 100% श्योरिटी है कि ये ड्रॉ होने वाला है, and you still need to keep for maybe 2.5 sessions, and that was the most tiring. You see, there's no result that is happening. We're just going through the motion. Yes, bowlers will like to take wickets. Batsmen will try to score runs, but if there's no result in the nearest future, like कि यार ये खत्म करके चलते हैं ना. Why do we need to be here? So I love the fact that in between, there's a big change in the way people started playing test cricket. A lot of the wickets were very juicy wickets. So let's say, if you're playing in England, Australia, South Africa, the wickets were in favor of the bowler. In India, we used to play more on the spinning track. And that's the challenge that you have to face. And you knew that, okay, if the game goes on till 4th or the 5th day, you will get a result. Imagine telling someone who doesn't know about cricket, we play over 5 days. We start at 9:30, 4:30 is the scheduled end of day's play, but we play till 5 o'clock, and after 5 days, sometimes we don't get a result. So that can be very, for the game, it's not very nice. Yeah. So I love how there's more results in today's world. Even if you're playing only 4 days of cricket, and if one day gets washed out, more often than not, still you'll get a result. So that's the beauty of Test cricket, and I feel that's how it should stay. You want to get a result after 5 days, you shouldn't have a draw. कभी-कभी, my bike, when you want to get a result in your favor, part of doing that is taking risks. And as captain, जब कभी आप risk लेते हो, and it doesn't pay off. Is there a guilt associated when you lose a match? Do you feel bad? Like how do you let go of a risk that you took and it didn't pay off? Do you think about it often? It's like life. There are certain types of risks that you have to take, and Duncan Fletcher used to have a very nice saying. Their risk. It was actually tricky how he used to say it. So their risk you can afford. You cannot afford not to take, but there are certain risks you can afford not
not to take. So it was very confusing for me. But basically, what he meant is, in life there are certain times you have to take the risk, but certain times you can avoid that risk. सुन रहे हो ट्रेडर्स? अच्छा, FNO वाले आए हैं? या फिर रीगी का इवेंट होता है, मार्केट की आप लगा देते हो? पिछले बार भी हुआ था ऐसे ही कुछ तो। हाँ, मैं अब अभी वेरी स्मार्ट पीपल अभी बोलेंगे बाइंग अपॉर्चुनिटी है। बाय द डिप। भाई साहब पैसे डूब रहे हैं, आप बोल रहे बाइंग अपॉर्चुनिटी है। एंड द ब्यूटी इज एवरी सेकेंड डे दे गिव अ थर्ड आइडिया कि ये कैंडल बन गया है, वो कैंडल बन गया है, अब ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इट कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स हैपन एंड दे जस्ट स्विच ओवर। वो भूल जाते हैं कि कल मैंने क्या बोला था। दे स्टार्ट ऑन अ डिफरेंट लेवल ओनली। सो हाउ मेनी ऑफ यू ट्रेड? ओके, जिनकी दाढ़ी सफेद हो गई है, दे नो व्हाट दे आर डूइंग। ऑल द प्रोफेशनल ट्रेडर्स, यस, दे विल कीप ट्रेडिंग। जो यंगस्टर्स हैं, प्लीज FNO में मत घुसना, निकलना मुश्किल हो जाएगा। इफ यू रियली वांट दैट थ्रिल इन लाइफ और जो एड्रेनलिन का रश चाहिए ना, डू सम अदर एक्टिविटी। डोंट ऑलवेज गो इन यार मैं आज 5000 का लगाता हूँ, देखता हूँ क्या होगा। इट्स नॉट फॉर यू। The professionals, yes, they can handle it, but other than that, have a lot of fun with stock. Keep it. It's not going anywhere. FNO is knuckleball. FNO is different level altogether. Nowadays when you log into the whatever app you are using, first thing it says 90% of FNO users lose their money. मैं बोलता हूँ ये 10% बाकी कौन है? So basically those 10% are the ones who are eating the 90% of us. They are eating our money and they are making their money. Wow. Yeah, that's why I stopped. आप चेजिंग माई बाय पे छोड़ देना। क्रिकेट से कितनी जल्दी हम शिफ्ट हो गए ना। मैं वही देख रहा हूँ, आप क्रिकेट के बारे में इतने पैशनेट, स्टॉक के बारे में तो आपके अंदर से गुस्सा निकला। नहीं यार, FNO में लॉस होता है। स्टॉक की मैं बेस्ट बात बताता हूँ। आई लव सो बहुत ज़्यादा मैं न्यूज़ चैनल नहीं देखता हूँ, बट स्टॉक के देखता हूँ सवेरे एक बार, क्या हो रहा है ग्लोबली, क्या हो रहा है। सो लेट्स से आई हैव अ स्टॉक विच इज़ A, तो जस्ट फॉर रेफरेंस कि मैंने 1000 रुपये में लिया था। सो इट गोज अप, समवेयर इट हैज़ गॉन टू 1800। सो 1800 2000 होता है, देन इट कम्स बैक टू 1800। नाउ द नरेशन इज, इस डिप पे ना खरीदना चाहिए। एंड आई एम लाइक मेरे 1000 के 1800 हो गए हैं, ये डिप पे जो खरीदेगा उसके बाद जो डिप आएगा वो कहाँ जाएगा? ये है डिप पे खरीदने वाली ये। सो आई ऑलवेज गेट वरीड कि ऑल टाइम हाई पे जब रिकमेंडेशन आती है ना, इसका आगे बहुत ब्राइट फ्यूचर है, अभी लेने का टाइम है। मतलब मैं नहीं ले रहा भाई, ये कहीं के चांद पे भी चला जाए, मैं नहीं ले रहा। इट इज आउट ऑफ माई टारगेट सिस्टम। सो बट दैट्स हाउ इट इज। पीपल वांट टू राइड इट, बट at least with the stock, the great thing is the stock is in your account. You may have a loss 10, 15%, 20%, 25%, but if you have bought something that has the right fundamentals, you won't make a big loss. You will get your money. FNO में खाता नहीं लगाएंगे FNO। हाँ, ये बोलेंगे भी स्टॉप लॉस जरूर रखना।